Hello everyone. Today I want to talk about whether the money you have invested in mutual funds is easily accessible. Dadu is going to demonstrate it without even realizing it. आज दादू का pension collection day था. पैसे लेकर आए हैं. And now he's looking for the key to the cupboard. Pocket में है दादू. Now watch closely. Dadu is going to take a small amount of money and keep it aside. Just like the money in Dadu's wallet is easily accessible, म्यूचुअल फंड्स भी अपने इन्वेस्टर्स को अपना पैसा कभी भी इन्वेस्ट या विड्रॉ करने का फ्रीडम देता है, सिमिलर टू योर बैंक अकाउंट. एंड व्हेनेवर द इन्वेस्टर्स नीड टू विड्रॉ मनी, ऑल दे हैव टू डू इज सबमिट अ रिक्वेस्ट टू द म्यूचुअल फंड्स कंपनी एंड दैट मनी इज मेड अवेलेबल विद इन 1 to 3 days. एंड नाउ यू कैन डू दिस ऑनलाइन टू. वो दादी ने कहा था कि दूध वाला बिल लेकर आया था. सी, जस्ट लाइक दैट. एंड द रेस्ट ऑफ द मनी आई नो मेरी शादी के लिए है. ड्रीम ऑन यंग मैन. So while I dream on, you remember two important things. One, mutual funds में आपका पैसा हमेशा accessible होता है. You can withdraw a small part of it or all of it. Or you can also set regular withdrawal dates and withdraw small parts at fixed time periods. You have full control over all the money all the time. And two, you can now track all your money that you have invested from the account statement, which is just like your bank passbook. इसीलिए तो लोग कहते हैं mutual funds सही है. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.